Good morning students. As our previous video, we had discussed about the sum of roots, product of roots and forming the quadratic equation as we know the roots. So we had discussed yesterday about the sum of roots is formula minus b upon a, product of roots is c upon a, and quadratic equation formula is what? X square minus sum of roots x plus product of roots equals to 0. Okay, so now see the first question. Today we are going to start the exercise number 5. So question is, find the quadratic equation whose sum and product of roots are following. So what we have to find? We have to find out the quadratic equation. So as we know the formula, क्या लिखा है? Find the quadratic equation. So this is the formula. Okay, so what? You have to find out the quadratic equation and roots are given. Sum of roots is -4 and product of roots is 12. Okay, and those students still not see the previous video, first see that previous video, then you have to see this video. Okay, now see this one. We have to find out the quadratic equation. Sum of roots and product of roots are given. So as we know, we have to make the solution here. So sum of roots is given, we have to find out the quadratic equation. This is your formula. So quadratic equation is this. What is the formula? X square sum of roots x plus product of roots equals to 0. ठीक है, तो sum of roots x plus product of equals to 0. x square का x square, sum of roots is given. कितना है sum of roots? -4. Put here -4. Directly you have to put. Students here not questioning here alpha and beta. यहाँ से तो directly दे दिया. Sum of roots -4 है, product of roots 12. Just you are putting here just or nothing, और कुछ नहीं करना है. X का x plus. What is product of roots? 12 equals to 0. So x square minus plus 4x plus 12 equals to 0. हो गया. This is your answer. X square plus 4x plus 12 equals to 0. So I hope you have understood about the first question. ठीक है, here only sum of roots is already given, -4 and product of roots is given 12. Just we have to put here in this formula. ये formula put up कर लिए, ये आपका quadratic equation is done. Okay. Now see this first का second one, sum of roots is 6 and product of roots is 9. ठीक है, sum of roots is 6 and products of roots is 9. So what is the formula? We have to find out the quadratic equation. So formula is x square minus sum of roots x plus product of roots equals to 0. So x square, sum of roots is given 6, put here 6. Product of roots is given, here 9 equals to 0. Okay. So x square minus 6x plus 9 equals to 0. Okay, this is your answer. Okay, easy. Now see the first ka fourth one. First ka third one is homework for you. I am following you first ka fourth one. Okay, same here. Sum of roots is 4 upon 1. Product of roots is 1. The formula is what? X square sum of roots x plus product of roots equals to 0. So x square, what is sum of roots here? 4 upon 9. X, product of roots is what? 1 equals to 0. Solve this one. X square minus 4 by 9 x plus 1 equals to 0. Clear? Not taking the LCM here. Nothing is means 1 1. So taking LCM, तो ये हो जाएगा 9x square minus 4x plus 9 equals to 0. So 9x square minus 4x plus 9 equals to, this go this side to 0 into 9. So 9x square minus 4x plus 9, or 0 9 is a 0. So this is your quadratic equation. Easy. Okay. Now see the question number 2. First ka fourth is done. Now see the question number 2. Now see the question number 2. What the question says, find the quadratic equation whose roots are as following. Find the quadratic equation whose roots are given. Roots क्या है यहाँ पे? अल्फा
equals to 7 and beta equals to 4. Okay. So what students, what we have to find? We have to find out the quadratic equation. और यहाँ पे दिया हुआ है roots are given. यहाँ पे root दिया हुआ है. In the previous question we had already given the sum of roots, product of roots. But यहाँ पे क्या दिया हुआ है? Roots दिया है, सिर्फ roots दे दिया है. Okay. So what is the formula here? X square minus sum of roots x plus product of roots equals to 0. क्लियर. सो एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट इज सम ऑफ रूट्स. अब देखो यहाँ पे सम क्या है 7 + 4. ठीक है ना. सम ऑफ रूट्स दिस इज ऑल्सो रूट, दिस इज ऑल्सो रूट. तो 7 + 4 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. दिस बोथ आर रूट्स, अल्फा एंड बीटा बोथ आर रूट्स. तो 7 × 4 इक्वल्स टू 0. सो एक्स स्क्वायर माइनस 7 + 4 11 x plus 7 4 is 28 equals to 0. So what we got here? X square minus 11x plus 28 equals to 0. So this is your answer. Easy. ठीक है. So next is -5 को -11 roots are given. So alpha is what? Alpha यहाँ पे 7 and beta equals to 4. ओके. इसमें अगर ये देखो एक और फॉर्मूला पर लिखे थे ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, और वी हैव टू से दैट इसको ऐसा लिख लो अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. तो अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0. बोथ आर सेम. ठीक है ना. एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स. तो सो वी आर राइटिंग हियर अल्फा प्लस बीटा, एक्स का एक्स प्लस का प्लस एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वी आर मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा. बोथ दिस इक्वेशन बोथ आर सेम. वी हैड ऑलरेडी डिस्कस एज द प्रीवियस वीडियो. ठीक है यहाँ तक. अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट इज अल्फा हियर -5 प्लस बीटा, अच्छा सॉरी यहाँ पर गलती लिख दी क्या, जस्ट अ मिनट. यहाँ पे अल्फा की वैल्यू -5, अल्फा की वैल्यू -5 है, मैं इसी को लिख. अल्फा की वैल्यू क्या है -5, बीटा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स -11. सॉरी. ठीक है ना. अल्फा की वैल्यू -5 और बीटा की वैल्यू -11. अब ठीक है. अब देखो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू -5 प्लस का प्लस बीटा की वैल्यू -11 एक्स प्लस अल्फा की वैल्यू -5 बीटा की वैल्यू -11. इज इट क्लियर? इक्वल्स टू 0. ठीक है यहाँ तक. सो आफ्टर दैट एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे देखो माइनस, देखो माइनस प्लस माइनस, तो -5 -11 -16 x प्लस 11 5 से -5 -11 11 5 से 55 और माइनस माइनस प्लस. तो एक्स स्क्वायर -16x प्लस 55 इक्वल टू 0. सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. Now see second का fifth one, third and fourth is homework for you. Okay. Now see the fifth one. Easy students बन जाएगा ये. अब क्या दिया अल्फा इक्वल्स टू वॉट 4/5 एंड बीटा इक्वल्स टू -3/5. यही है. ठीक है. सो एडिशन ऑफ द इक्वेशन, क्या इक्वेशन? एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. सो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0. क्लियर. सो आफ्टर दैट एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट इज अल्फा इसका 4/5, राइट 4/5 प्लस व्हाट इज बीटा -3/5 एक्स प्लस व्हाट इज अल्फा 4/5 व्हाट इज बीटा -3/5 इक्वल्स टू 0. क्लियर. आफ्टर दैट एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस 4/5 -3/5 ये x. अब देखो प्लस माइनस 4 3 12 5 5 25 इक्वल्स टू 0. सो एक्स स्क्वायर माइनस टेकिंग एलसीएम यहाँ आ जाएगा 5. ठीक है. 4 - 3 1. ठीक है ना. एलसीएम आएगा तो क्या आएगा 5 आएगा. 4 - 3 क्या हो जाएगा ये 4 - 3, तो -12/25 इक्वल्स टू 0. सो हियर एक्स स्क्वायर 4 - 3 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय x अपॉन 5 -12/25 इक्वल्स टू 0. सो एक्स स्क्वायर माइनस x अपॉन 5 -12/25 इक्वल्स टू 0.
Clear? Or after that you're taking the LCM if you want. Take the LCM. This is also answer. Okay? This is also your answer. Or you take the LCM. Okay? अब देखो LCM को तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 25. दिस ऑल्सो इज आंसर. ठीक है, यहाँ से अपन थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकना है तो आप यू हैव टू मेक. यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, तो आ जाएगा 25x² माइनस 5 है 25, तो 5x माइनस 12 इक्वल्स टू 0. नाउ दिस 25 को दिस साइड, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 25 0. ठीक है ना, 25 मल्टीप्लाई बाय 0 0, तो आपका बचेगा 25x² माइनस 5x माइनस 12 इक्वल्स टू 0. So either you have to either write this one or either you have to write this one. Both are correct. Clear है? ठीक है. Now to the next one. See the second का 7th one. Alpha equal to -1/3 and beta equals to 1/5. So we know the formula x² minus alpha plus beta plus ये. ठीक है, this is a formula. तो x² minus what is alpha here? -1/3 plus what is beta 2/5 x plus alpha into beta. What is alpha here? -1/3 multiply what is beta here 2/5 equals to 0. Okay, now after that x² taking LCM, माइनस का माइनस आ जाएगा 15. ओके, तो 3 5 यहाँ पे आ जाएगा -5 प्लस 5 3 2 6. यहाँ पे x प्लस -2/15 इक्वल्स टू 0. तो x² माइनस 5 प्लस 6 1, तो सीधा से आपका आ जाएगा 1/15x प्लस माइनस -2/15 इक्वल्स टू 0. तो x² माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 1/15x माइनस 2/15 इक्वल्स टू 0. So this is your quadratic equation. So this is the answer. If you want to make a more step, then we have to make here. Both are correct here. Now see here, nothing is there. It means then taking the LCM 15. तो यहाँ जाएगा 15x² minus x minus 2 equals to 0. Now this 15 going this side, so 0 into multiply 15, so it makes 0. So 15x² minus x minus 2 equals to 0. So this is your final answer. Both are correct. This is also correct and this is also correct. Okay, this is also correct and this is also correct. Both are correct. Is that clear? ठीक है. Now see the next one. Now see here, second का 9th one students, √3 minus 7 and √3 plus 7. So alpha is what? √3 minus 7 and beta is what? √3 plus 7. ठीक है, this is alpha and this is what? Beta. So as you know the formula, x² minus sum of roots x plus product of roots equals to 0. So x² minus, देखो अल्फा क्या है पे √3 minus 7 प्लस what is beta √3 plus 7. क्लियर है? क्लियर हो रहा है? x प्लस what is alpha √3 minus 7. What is beta? Beta is √3 plus 7 equals to 0. Clear? So x² minus, now see here, so √7 cancel, √3 plus √3 क्या हो जाएगा 2√3 x plus, now see here, √3 minus 7 √3 plus 7, a minus b a plus b. So as we know the formula a² minus b². ठीक है ना, a minus b और a plus b. So a² minus b². So same here also, a minus b a plus b, a² minus b². तो क्या हो जाएगा ये √3 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0. सो x² माइनस 2√3 x प्लस √3 का स्क्वायर 3, ओके, 7 का स्क्वायर 49 इक्वल्स टू 0. सो x² माइनस 2√3 x प्लस 3 minus 49 students minus 46 equals to 0. So x² minus 2√3 x
plus minus minus 46 equals to 0. So this is your final quadratic equation. Okay, so I hope you have understood. Clear है? So same as it is second का 10th और स्टूडेंट second का 10th same as it is ऐसे ही बनेगा. This homework for you. Okay, so make homework second का 10th one. Is there doubt? Then ask. Clear है? Now see the question number 3rd. Now see the question number 3 student. What the question number 3 says, find the sum and product of roots. अब यहाँ पे क्वेश्चन we are not be here in this question we are not find out the quadratic equation. So we are here we have to find the sum and product of roots. What we have to find the sum and product of roots of the following quadratic equation. Means quadratic equation is given, so we have to find out the sum and product. So quadratic equation दिया 3x square plus 9x plus 1 equals to 0. So first we have to comparing with ax square plus bx plus c equals to 0. So what is the value of a students? 3 x square, b की value 7 and c की value 1. So sum of roots, we have to find out the sum of roots equals to minus b upon a. So minus का minus, what is the value b? 7. What is the value a? 3. So this is your answer. Clear है? What is product of roots? c upon a. What is c here? 1. And what is a here? 3. So this is your product of roots. So sum of roots 7 upon 3 and product of root is 1 upon 3. Clear? Now the second one. 2x square minus 2x plus 3 equals to 0. ठीक है? So after that, first we are to comparing with ax square plus bx plus c equals to 0. So a की value 2, b की value minus 2 and c की value 3. Clear? What we have to find out? We have to find out the product of roots, sum of roots. Sum of roots it's minus b upon a equals to what is minus का minus, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे minus 2. What is a? 2. तो माइनस माइनस प्लस तो 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1. तो 2 2 कैन, ठीक ना, माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c upon a. What is c here? 3. What is a here? 2. So 3 upon 2. So sum of root it's 1 and product of roots is 3 upon 2. Is it clear? ठीक है? Now see the fourth one. Third is homework for you. All questions are same students. Don't be panic. Okay? सभी easy है. तो 2x square minus 2 root 6x plus 3 equals to 0. What is the first work on comparing? So on comparing with ax square plus bx plus c equals to 0. A की वैल्यू 2, b की वैल्यू minus 2 root 6 and c की वैल्यू 3. Okay, so sum of roots minus b upon a, minus का minus, what is the value b? Minus 2 root 6 upon a 2. Clear? So minus minus plus, the 2 root 6 upon 2, to 2 cancel, so root 6. Clear? And what is product of roots? c upon a. What is c? 3. ठीक है? And what is a students? a की वैल्यू क्या है? 2. So this is your answer. So sum of roots it's root 16, sorry root 6, and product of roots it's 3 upon 2. Okay, is it clear? So this is the fourth one, and fifth one do it yourself. ठीक है, easy है, x square plus x minus 6 है, बन जाएगा वो. Okay, so here, so in the question number 3,
just a minute. So in the question number 3, homework is question number 3, those who have not done, third and fifth one. Okay, third and fifth one is homework for you. If there any type of doubt, then ask. So question third and fourth homework for you. ठीक है. So ये exercise 5 is completed. We had completed this one. So in the next class we will discuss new thing, new chapter, new concept. Okay. So make a revise of this topic. Is there any type of doubt, then ask. Make homework. Any type of doubt, then ask. Okay, students. Thanks to all of you. Take care.